including the participants, everybody is now kind of sick of online sessions, and we want to move on to more face-to-face interaction because, and we all agree, it's more powerful in so many it's always powerful. Yes. And I too would have expected to organize it in an offline mode, but then participants were more of the view to join it in the online mode. Okay. Then fair enough. Not an issue. Just one quick question. I don't know how to use, if I have to use a breakout room using Google Meet. है तो सही इसमें, पर उसमें वैसे तो ना ये Zoom में हो जाता है अगर हमने डिवाइड करना हो तो. एक सेकंड, वो है शिखा, आर यू देयर? शिखा, हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? कर देंगे कीर्ति जी. ठीक है, thank you so much, because there are 1 or 2 exercises which I would like to highlight on, and we would like to have a more online interaction and more interactive session in an online mode as well, rather than having a one-way kind of communication. So that was the whole idea. All right. Thank you so much, and good afternoon, all. Give me an opportunity to introduce you with all the participants. Dr. Kirti Sharma ji, she is a PhD in Marketing and Service Management, with her special emphasis on the consumer perception and satisfaction. She is holding various teaching and administrative responsibilities during her entire academic tenure, and she still is having a lot of additional charges and the other responsibilities at MDI. She started her career in the pharmaceutical sector and then moved on to the consumer white goods and eventually landed into the IT. And thereafter, she joined the MDI. Apart from the teaching, research and training, she has collaborated with the government of Haryana, Directorate of Urban Local Bodies as a consultant for marketing, the communication and content development for the smart cities here in Haryana itself. And she has also completed the multiple assignments in the capacity of a consultant to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, that is MSME, on the evaluation of the Prime Minister's Employment Generation Program. And she is honorary consultant to Khadi and Village Industries for advising on marketing of the KVIC products. And she has been working on the multiple projects with the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. With more than 19 years of teaching experience and 4 years of the industry experience, she has been also awarded with a lot of she has a lot of achievements and awarded with felicitated with many awards like Women Entrepreneur of the Year by the Bharat Nirman for brilliance in the field of education. And she is also the honorary consultant with the KVIC MSME and member of Communication Committee of the Ministry of Statistics and Program Implementation, member of the NASSCOM in the year 2019. And she has also visited number of other countries for the academic exchange program. And a lot of scholars and a lot of research papers under her, she has published in the national and international journals. And the list goes long and long and long. And we are so much honored, Kirti, to have you here. And very kindly, you have accepted my invitation. It would have been a pleasure to meet you offline. It's long time, but still taking it on the online way. At least we are able to interact and see each other through this means. I'm really thankful, and I welcome you to your own HRDC. Yeah, pleasure is mine. Good afternoon, everyone, and I'm Kirti. Yeah, please. Okay. Out नहीं हो पा रहा. चलो ठीक है, we'll do something. ये गूगल में हो जाता है. और Zoom में, sorry, Zoom में हो जाता है. Zoom में हो जाता पॉसिबल है क्या शफाली, अगर हम Zoom या एक काम करते हैं, we'll try and do this in the second half. उसका आप Zoom लिंक बनवा दीजिए, हम 1.25 घंटे के बाद एक 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे. ठीक है, ठीक है. Then we can do it, मतलब फिर हम उसमें Zoom. ठीक है, फिर उसका हम लिंक. आपके पास लाइसेंस है?
जूम का भी कोशिश करते हैं, अगर हो सकता है तो लाइसेंस नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, देन आई विल जनरेट अ लिंक. आपके पास है तो आप अपने वहां से एक लिंक जनरेट कर लीजिएगा, आप मेरे को शेयर कर देना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी सारा. ठीक है, तो दे विल जॉइन थ्रू दैट. लेते ही आई विल शेयर. हाँ ठीक है. इनफैक्ट तब तक हम यहाँ से साइन आउट नहीं करेंगे, मैं लिंक बना के यहाँ चैट में भी दे दूंगी, एंड देन आई कैन फॉरवर्ड इट टू यू एज वेल. फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. ठीक, थैंक यू एंड विल स्टार्ट नाउ. Good afternoon everyone once again, and in fact, first of all, one thing which I think Professor Shafali did not mention, so I am primarily a science student. I have done my BSc in mathematics, computer science and physics, and I landed up in management, I should say, because us zamane mein, so I did my graduation in 96. And being from a small place in Haryana, the awareness in terms of what kind of opportunities are available was very less. And in Panipat, my father was like, "Bhai, theek hai, physics या computer science में अब MSc है." उसी टाइम में नया MCA का कोर्स आया था, तो उन्होंने कहा ठीक है MCA कर लो या MSc मैथ्स फिजिक्स कर लो, and then we'll see आगे क्या करना है. तो मुझे लगा ये तो बड़ी लाइफ में बोरिंग सी जॉब होगी, या तो टीचिंग में जाना पड़ेगा या साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, और दोनों ही करने के लिए मैं तैयार नहीं थी. एंड इमेजिन, जिस चीज से आप सबसे आप भागते हो वही चीज आपको जिंदगी भर करनी पड़ती है. एकेडमिक्स में बिल्कुल नहीं जाना था, एंड नाउ आई एंजॉय एकेडमिक्स. सो दैट्स द just cutting the long story short. So from being a mathematics graduate, but I think a lot of understanding of problem which I am able to do little better, I would say, than a lot of people is because of my science background. Kyunki, and science means it's not just, mathematical or physical sciences. So there is science in everything, whether it is social sciences or any other science. So the idea is we generally are being trained to think in a very logical manner. So when I say scientific mind, it means we think from a problem point of view. So whether it is social science or mathematics or computers or any other field, and I'm sure people here in this group is a mix of different backgrounds. So can we quickly have a, just in one word, if you can mention what is your background, so that when we discuss, I can bring in those examples and relate with your field. Because with new education policy and how we are now preparing ourselves to be little better and engaged instructors. So I will still not say teacher, because we are learners for life. We keep learning. If there is a new technology which comes in, or there is a new study in our field, we all read and we try to use it in our classroom. So it's like we are more of learners for lifetime. And hence, it is important to see that why there is a need to look at a more holistic viewpoint. Because of new education policy, everybody is going to have more emphasis in multidisciplinary. So gone are the days कि भाई आप maths के हो तो आप सिर्फ maths के area में रहोगे. You cannot publish, or you cannot research, or you cannot teach some subjects which are related with mathematics. So I see a lot of people who are from maths background, they go on, they do maybe PhD or something else in a field which is related, but has some kind of interdisciplinary relation. Similarly, in social sciences, I think most of you are aware that there are at least 3 top IIMs in top 10 NIRF ranking. I am Kozhikode and I am Indore. Both have started a management program which is into liberal sciences. So, and there is a social science school and a faculty which has also been established. So what now everybody at a more national level, and even because of new education policy, we are looking at something which is more holistic. We do not want a manager, or we do not want a student to come out after doing a graduation or a post-graduation just restricted
restricting his or her thinking to his or her own field, but it should be something wherein we are able to create and generate some kind of curiosity where these students can look at larger problems. For example, when I worked with water department, now I as a person has no lena dena with water department, and all of you will agree. Being in management, being in sciences, kabhi water mein kaam nahi kiya, but we just took it as a challenge, and that project was only open to management institution. There are very specialized water departments in IIT Roorkee and some of these IITs. They were called for certain bits which were more technical in nature, like they do water studies and depth studies and all of that. But we were invited to look at how do we manage water? How do we manage stakeholders who get affected because you build a canal at from one particular location to another location, and there is always displacement of people, sometimes villages, and there is human life, and not just human life, there is overall environment which gets affected. So how can we manage this? Now this comes under a larger perspective of social sciences, because managing these things, when we look at environment, this is a very social issue. When you look at stakeholders, human life, there will be migration. So migration clearly comes under social sciences. So that's the idea, and I want all of you to start thinking on those lines. Try to, and frankly speaking, when I was a faculty, I have started from a very small college. I taught at Bharatiya Vidyapeeth first. Then I have taught in private institution like GIMS, Lal Bahadur Shastri Institute of Management, before joining MDI. And at that point of time, when I attended one of such FDPs, which was organized by MDI and one at IIM Ahmedabad, I realized that I got a new vision. You know, when you join these FDPs, you interact with people from different backgrounds, and you get to think new. So there is some kind of rejuvenation which has to happen. I don't know at a subject level how much we gain, but definitely at a vision level, we do gain when we attend these kind of FDPs. And that is the key objective, that as an instructor, as a teacher, how you are improving and improvising on your vision. And that is where you would like to go. And hence you would start to influence your students as well. So that's the key objective. And keeping this in mind, when I was discussing with Professor Shafali, we thought that I will introduce to you with a methodology which is very powerful in social sciences, that when you want to teach something, we do not teach as a one-way communication, but we try to build up an environment where the individual would learn on his own. And this methodology and this pedagogy is called a case study method. And just try and remember, हम लोग कभी सड़क पे जा रहे हैं या हमारे साथ अगर कोई वाकया हुआ है, हम उस वाकये को, उस इंसिडेंट को कभी नहीं भूल पाते, राइट? एंड दैट इज व्हाई बचपन में जब हम अमर चित्र कथा पढ़ते थे, हर स्टोरी के बाद एक लेसन होता था, and that lesson used to be taught through that story. So case study method in social sciences is one such powerful method, right? And if you see the kind of cases we have in these repositories, so there is a Harvard repository and then we have Ivy Business Publishing repository. In both the repository, you have cases across. आपको maths का कोई subject पढ़ाना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है, स्टैटिस्टिक्स का कोई टॉपिक पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल किसी को अगर क्लस्टरिंग पढ़ानी है या आपको रिग्रेशन पढ़ाना है, सो रादर देन जस्ट राइटिंग अ फॉर्मूला अबाउट रिग्रेशन, वी ट्राई टू डू इट थ्रू अ स्टोरी कि ये फैक्टर्स है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें अगर ये चीज हो रहा है तो कहाँ पे इंटरेक्शन है. एंड दैट इज वेयर वी इंट्रोड्यूस स्टूडेंट अ पर्टिकुलर मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. So it's a very different approach, and as teachers, as instructors, we not only use cases, but we write cases. So it's a part of your methodology in terms of
the kind of research you do. So NIRF may now it is almost mandatory for everybody to contribute towards research. So even if you are writing a case, there are certain journals which are only specific to case journals. And they are very high impact factor because case तो जहां भी छोटा भी मैनेजमेंट कॉलेज है, BBA भी है, MBA भी है, छोटे छोटे केस तो हर कोई यूज कर रहा है, राइट? सो इट मीन्स कि शायद आपका रिसर्च पेपर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में आपने लिखा है 10 लोग ना पढ़े, बट केस there is a possibility that more and more people will read your case, and hence there is more possibility of getting more citations as well. So that was the whole idea. Let me share my presentation, and I'll be happy if you have any question. You can interrupt in between and just raise your hand, or you can just unmute yourself and barge in between, because if we wait till the end, sometimes we miss what we wanted to explain on that slide. Okay. Is my presentation visible? Yes, ma'am. Okay, the problem is I can't see anybody now. Let me wait. Just give me 1 second. I'm not very comfortable with the Google Meet. Okay. All right, good. Okay, some issue. I'm not able to see myself or any one of you, but I hope that should be all right. All right. But your screen is visible, ma'am. Screen is visible? Okay. Yeah. That serves the purpose. Thank you so much. So you can, because I'll not be able to see, I think your hands raised or something. So you can just join in, unmute yourself in case you have any questions. Okay. So, yeah. So the main question is that when we are using a case study method as a teaching instrument. Now, I've written management education here because I come from that background, but these days it is not just used in management education, but across liberal sciences, social sciences, as well as technology sciences. So we have a lot of cases which are available around technology and topics which are very technical in terms of mathematics or physical sciences as well. So how can a case method, right, that what is your internal environment on which you have some kind of control, you will never have a control over the external environment. So what these two environments comprise of? So you will have some information about it in your case. It is written from the viewpoint of a decision maker involved. So person who has to take some kind of decision will be using a case method. So let's, before moving forward, I want I'll just show you one case and then so just quickly read this, and once you tell me, I can scroll down. You can see the screen? Yes, ma'am. Okay, so this is a case which we had published in Harvard Business Publishing. I'll show you the site as well.
And so Ratan Kumar was one of our PhD student along with us. Was later on we realized जब हमने केस लिखना शुरू किया कि इसमें थोड़ा सा strategy का angle है. So we involved a professor named as Shiv Tripathi from the strategy area. So sometimes when you start to write a case, and as teachers, I'm not too much interested that you, of course, if you're using cases or you wish to use cases in future, it's a very powerful tool of teaching. But at the same point of time, I am more concerned and I'm more motivated to introduce case study and writing case study as one of the very strong research based method of developing research which can be more disseminated. I mean, there will be more and more people who will write the case. So just read this very small paragraph of almost 12-13 lines. I think इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि केस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन आदमी इसमें डिसीजन ले रहा है और उसको किस तरह का डिसीजन प्रॉब्लम है. So that is the beauty of a case. Can you please zoom it, ma'am? We are not able to read it. Yes. Is it better? Yeah. Just let me know, then I can scroll down. Yeah, quite so, ma'am. और हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम नहीं होती है. केस इज ऑलवेज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम. सो देयर वाज एक्चुअली अ गाय, हम नाम कई बार चेंज भी कर देते हैं इफ कंपनी डजंट वांट कि भाई हमारे जीएम का या जो हेड है उसका सीधा नाम नहीं जाना चाहिए. समटाइम्स वी चेंज द नेम, बट इफ दे आर ओके विद दैट then we keep the name. So this guy Suraj Nair was actually the head of marketing at Air France India when this case was written. इसका आप लेना चाहें तो एक बार फोन पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज देन वंस आई ओपन द सेशन आई वांट यू टू पॉसिबली आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू रेज. तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. Yeah, Meenakshi. You have a question? नो मैम, ये गलती से रेज हो गया. अच्छा, कोई बात. BPS से कौन है? Can I share a document in chat? Yeah, ma'am. जगदीप कैसे करेंगे एक बार आप? I think PowerPoint something will be there. Zoom में तो हो जाता है, उसमें साइड में एक आइकन होता है वर्ड से बना. इसमें भी होता था मैम पहले, बट इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा. आई थिंक कुछ ब्लॉक किया हुआ है क्या स्वाति? I think I'll send it to Shafali if she can share.
wait, Rian, wait. Red? Just tell me if you have read. Yes, ma'am. Okay. All right, let's come back. Now, okay. Tell me, what do you understand from this very small first introductory paragraph? Anyone, please. और क्लास में अभी हम है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता. There is nothing called as कि भाई हमने गलत बोला या हमने सही बोला. One should not be worried about it. So, and even allow your students to commit as many mistakes as possible because गलती करके ही हम सीखते हैं. So one should not shy away of participating. Yeah. Anyone, please? And there's this scene about a senior professional Yes. from Air France, and they had a good number of customers in their economy section, but in the business class section, they had fewer customers. Right. So they were attending this meeting where they could deliberate upon how to better their performance in business class section. Amazing. Very right. Thank you so much, Chitra ji, for giving us this Thank insight. you, ma'am. Now, just imagine अगर मुझे एक particular topic सिखाना है class में, and let's say that topic is how to increase revenue between two product offerings offered by a company. So it could be a product, it could be a service. Now, in case of Air France, it is a service, and they have two types of services. And we now see that even flights like air flyers like Vistara, they offer economy, then premium economy and business class. So similarly, Air France had this problem कि जितने लोग book करते हैं वो सब economy class book करते हैं और हमारे business class की seats खाली जा रही. And that is where they generally make money. If they have 70 to 80% of seats in business class filled, then that is where their main revenue will come. Break even will come from economy class. So it's simple 80-20 principle जो सब banks में होता है, हर service में होता है ये कि 80% customers will give you only 20% revenues, and that 20% HNI premium customers will give you 80% of revenues. So same story, but rather than teaching it by using a theory and explain a student, it's always better that you create a scenario which is in the form of a case, which poses a question and a problem to the student. And these younger minds are much more anxious than what we were in our age, because I don't know about most of you, you are much younger. I'm 76 born. I have a 20-year-old daughter. So I see what I was at 20, she's way ahead. She knows much more. I mean, at the age of 18, she knew who was Malala. हम 18 साल के थे तो हमें पता ही नहीं था कि भाई दुनिया में कौन औरतें ऊपर पहुंची हुई हैं, कौन क्या कर रही हैं, who are the people whom we should be following. Thanks to internet. Thanks to internet, right? So they are much more informed lot. Now, if you start telling you the same definition which is already available on Google, or if you start giving the same theory which is already available on Google, वो आपकी क्लास में बिल्कुल भी interested नहीं होगा, because he'll think कि ये तो Google पे मिल जाएगा जाके. और while you are taking a class, half of the student, I don't know how is the scene in universities now, but until unless there are jammers, किसी ना किसी का छुपा के फोन तो ऑन रहता ही है, and they will be more interested in getting connected to their peer group on social media rather than listening what the teacher is saying. So it's very important that we develop some kind of interest and we question him and his ability that whether he can analyze.
So the moment we get student onto participating by posing a difficult question through the story which we have created by a small case, maybe 2-3 page case, students will be much more interested because इसमें जो questions है उनका आंसर इंटरनेट पे नहीं है, इसमें जो question है वो उसे गूगल नहीं कर सकते. So it's very important for them to think and possibly answer. And that is where, while explaining the answers, you can introduce a particular theory to them. And then you bring the definition and the theoretical framework. So that's the beauty of a case. So let's just move forward. And actually Zoom थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा user friendly है. Okay, is this visible now? Yes, ma'am. Okay, great. So as discussed earlier, this case will be written from the point of view of a decision maker who's involved. Like in this case, Suraj Nair was the person who was facing a problem कि भाई मेरा revenue नहीं बढ़ रहा है और ये issues आ रहे हैं, and hence the case has been written from his point of view. Now, what all can we do using a case method? So a case method is a case, in a case method, a case has to be given for reading along with some kind of textbook topic. And then let students discuss the case in classroom and give their arguments and independent opinion. Now the beauty of a case is कि इस situation में, क्योंकि आप एक मैनेजर हो सकता है आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो. So somebody who's 1 year experience and 5 year experience and 10 year experience, all these 3 people will think differently. They cannot think in the same manner. So hence you can have multiple right answers in a case. You do not have one single right answer. So that is the beauty of the case, that everybody will think, will contribute. And if you are able to give a justification that this is how I'm going to implement my strategy and this is what I'm proposing to do, you can, each individual will get involved, will learn from the theory and will give some kind of solution, which are alternatives in terms of either a present solution or possible future solutions. Also, when we are using a case method where we introduce a small problem in the form of a case, the responsibility of learning goes to the learner. Because learner has to participate, they have to think, they have to examine, and they have to give answers in terms of what they have learned. So they have to participate to propose their solution. So these 3 things make sure that at the end of the day, the participant will learn something from the case method. Now, that's why the students are addressed in a case class as participants, and faculty and teacher are being called as a facilitator who facilitate the process of learning. Now, there has to be some kind of gaps in the form of inadequacy of data of real life situation, which initiate discussion and imagination. अब क्या होता है कि जिंदगी में जरूरी नहीं है कि हमारे पास सब तरह का डेटा अवेलेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, when Suraj Nair is sitting, maybe he doesn't know that even if somebody can afford a business class ticket, why people are not buying a business class ticket. And one of the key problems which we identified was people are more concerned about price as a factor when you are flying or when you are going from one place to another by air. You are not concerned about safety. So there is something called as, different sizes of aircraft and the kind of safety features you have. It's something as similar as a car. तो कुछ कार आती हैं जो which have, only front seat driver and the front seat airbags. Some cars will have 5 airbags. So until unless we see
some kind of fatal accident, we do not understand and realize the importance of these safety features. Same is with the airline. Of course, the number of accidents are very less. But I know a couple of families, when they travel, both husband and wife, they never travel in the same flight because they are fearful that if something happens, which is a probability of some 0.% in the world, we don't want that we both are traveling by the same aircraft and something happens. So they always travel in 2 different flights with some kind of time difference. And even if they have to go to the same destination. So some people have that level of fear, and risk is always to over risk. When you don't want to take a risk, it is because you have a fear of that risk. And then you make certain decisions to overcome those risks. When we look at learning models, and I don't know if any one of you has gone through the National Education Policy as well, it clearly emphasizes on these 4 types of models. And in science, we do a lot of experiments. So it is exactly the same method. You do experiments. So even in management cases, we have certain experiments like you would like to see, for example, अगर आप एक ad बना रहे हो, उस ad में किस celebrity को लेना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें response मिले. You know, more and more people watch the ad and buy your product. तो भाई विराट कोहली को लेने से मिलेगा या किसी और क्रिकेटर या एक्टर को लेने से आपको ज्यादा रिस्पांस मिलेगा. सो यू कंडक्ट दीज एक्सपेरिमेंट. आप 3 ग्रुप ले लेते हो. एक ग्रुप में आप विराट कोहली वाली एड दिखाते हो, एक ग्रुप में आप किसी और एक्टर वाली एड दिखाते हो, एक ग्रुप में आप लेट से हार्दिक पटेल को लेकर के एड बनाइए वो दिखा. एंड देन यू ऑब्जर्व कि तीनों में रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ intention to buy your product कहाँ पे ज्यादा आ रहा है. On the basis of this experiment, we will take that celebrity in our ad. So even these small decisions के ad में किस celebrity को लेना है, these are on the basis of experiments. So when we see experimentation as a very powerful learning method, is not just used in sciences कि हम physics, chemistry, maths इन सारे subjects में तो experiment करते ही थे, but even in management, even in liberal sciences, you will see some or the other way to take certain decisions. We learn to do experiment and we model using those experiments. The second very popular method of learning is learning by reflection. And how do you reflect on what has happened? For example, when we read certain stories and certain biographies of successful people, that's how you reflect. And then you ask a student, you write a précis of this story. So it is basically that individual's own reflection and learning from that story. And that individual will have very specific learning, not necessary that another student in the class will have the same learning. So if you see nowadays in a lot of social sciences, liberal sciences kind of courses, you will find that there is one course, us course mein koi course book nahi hai. And the name of the course is you learn by reflection. So you subscribe certain very popular books in that course. For example, we learn a lot from Gita, even till date. We learn a lot from some of these other scriptures as well. So there are scriptures in each religion. So religion is one part. And they teach us more towards something like, let's say, leadership lessons from Gita or motivation lessons from Gita, something like that. So it's an individual's own reflex and reflection, right? So for me, one of these very popular, I would say a book, because I am not a ritualistic person. I am not religious, but I believe in some kind of energy. So there is this Learnings of Gita by Sarvapalli Radhakrishnan. And that Gita is always on my bedside. Because if there is any question in my mind before I sleep, I would try and open that Gita, and it will always give me some kind of solution or answer. So maybe because I am in that
state of mind where I'm looking for answer to a very specific problem. And maybe I will reflect towards that shloka and its explanation in the light of the problem which I'm trying to solve. So as an individual, I'm learning something from that scripture, right? So this is a very powerful method of reflecting on what has already been written or happened in the past. So we learn and we reflect on history. We learn from history what should be done and what should not be done, right? So in both kind of learning, what should be done, what we should do, and what we should not do. Even this is a very powerful learning methodology in terms of reflection. Third is abstract learning, where the learning is not very clearly defined, but you get your participants onto doing certain activities, and through those activities, they will share their own learning, because the learning need of each individual is different in the classroom. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक तालाब ले लें, तालाब में दुनिया भर का पानी है, बट जरूरी नहीं है कि जो भी अगर 10 लोग पानी भरने जा रहे हैं वो सेम अमाउंट ऑफ पानी भरेंगे. सिमिलरली एज अ टीचर, व्हेन यू आर टीचिंग इन द क्लास, योर टीचिंग एंड व्हाट वन कैन लर्न इज लाइक अ ओशन. इट्स लाइक अ बिग लेक. देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू. बट दे आर नॉट एबल टू लर्न बिकॉज हर एक का बकेट का साइज अलग है, हर एक की अपनी लर्निंग एबिलिटी है. सो व्हेन वी लुक एट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ लर्निंग, इट अलाउ every student to learn with their own pace and speed. Not necessary that you want to teach the same concept to everybody, but you give them time. You give them time and some kind of gap where they can go back, learn something, come back, and then a combination of abstract and reflect. What they learned, whether that was right or wrong, they can reflect on it and improvise. हम कहते हैं ना इम्प्रोवाइज्ड मॉडल है, तो कई बार स्टूडेंट्स विल कीप ऑन वर्किंग ऑन द सेम मॉडल एंड इवेंचुअली दे कम अप विद समथिंग व्हिच इज द परफेक्ट मॉडल. सो दैट्स अगेन अ लर्निंग मॉडल. एंड लास्टली, लर्निंग थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस. तो क्या होता है कि स्पेशली इन मैनेजमेंट, लिबरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज टुडे, अक्रॉस सब्जेक्ट्स आई सी, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स or game theory modeling, what we see in mathematics and a lot of subjects in computer science, we see that it is more of learning through concrete experience. You shoot a problem statement to the student and you allow them to learn through that experience. So case study method is again a method where you are learning by experiencing, being a, let's say in this case in Air France, Suraj Nair was the head of marketing. So you are learning as head of marketing that this is a problem and how will you provide a solution to that. So in a way, you are still a student, but you are experiencing how a head of marketing will face certain problems and what could be possible solutions. So what I'm learning today, how I'm going to use it in future, that experience a student gets through a case method. Any questions so far? जी मैम. Yeah, please. यदि आपको लगे कि रिलेवेंट क्वेश्चन है तो बताइएगा प्लीज. जैसे आपने कहा कि यू आर नॉट रिलीजियस बट यू बिलीव इन सम टाइप्स ऑफ एनर्जी देयर अराउंड, हमारे आसपास है, तो इसमें क्या अंतर मालूम आपको, क्या लगता है कि दोनों बातों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है, एंड वेरी पावरफुल क्वेश्चन. इनफैक्ट लॉट ऑफ, सो आई एम हिंदू बाय रिलीजन, आई एम अ ब्राह्मण, बट एंड आई डू गो टू सर्टेन टेम्पल्स, नॉट ऑल द टेम्पल्स, बट मैं बाकी बिहारी जाती हूँ और मेरा वहां पे बहुत विश्वास है, नॉट बिकॉज ऑफ द आइडल और समथिंग, बट मुझे ये लगता है कि जहां पर एक, एंड दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, चाहे वो मंदिर है चाहे वो मस्जिद है, बिकॉज किसी भी जगह पे अगर इतने सारे लोग बैठ करके प्रे करते हैं तो आप इमेजिन करिए वहां पे कितनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी होती होगी. एंड दैट इज व्हाई वी से देयर इज अ एनर्जी ऑफ साउंड. और साइंस में हमने ये पढ़ा ही है
एंड दैट इज वाई जब हम चैंटिंग करते हैं, वेदर इट इज ओम चैंटिंग और एनी अदर चैंटिंग, आई चैंट. सो आई एम अ मेडिटेटर, आई मेडिटेट एवरी डे. और मैं ओम चैंटिंग करती हूँ पूरा 21 टाइम्स और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करती हूँ. बट स्टिल आई सेड दैट आई एम नॉट रिलीजियस, बिकॉज मुझे जो कुछ रिचुअल्स हैं हमारे यहाँ कि मूर्ति पूजा और ये, थोड़ा सा मुझे उससे मतलब तकलीफ होती है. दैट इज समथिंग विच नोबडी इज बीन एबल टू एक्सप्लेन टू मी कि हम ये चीज, मतलब मुझे वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है. हवन में मैं बिलीव करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि वो भी एक साइंस है, वो मैंने पढ़ के जाना है कि भाई जब आप हवन करते हैं तो उसकी जो भी धुआं होता है वो सब जगह जाता है, तो वो प्योरीफाई करता है, और वो जब बाहर जाता है तो कहीं भी आपके घर में कोई अगर नेगेटिव एनर्जी लेके आया तो वो उसको साथ में साफ करता हुआ बाहर निकल जाता है. सो ऑल दैट आई बिलीव इन. मैडम, रिलीजियस होने का क्या मतलब होता है? ये सब आप करते हो. अब मुझे तो लगता है कि रिलीजियस होने का सही अर्थ यही है, मंदिर में जाना, मस्जिद में आना या रिचुअल्स को फॉलो करना. क्या वो रिलीजियस होना होता है? वो तो जस्ट हम किसी को वैसे ही अपना लोग चल रहे हैं तो हम. आप बिल्कुल सही. मुझे इन चीजों से इशू है कि जैसे मतलब कोई अगर हिंदू है तो वो इशू है. रिलीजियस होना तो है जो आप कर रहे हो सही मायनों में. थैंक यू. तो मतलब उस चीज में मैं बिलीव करती हूँ दैट देर इज ऑलवेज एन एनर्जी. आप पूर्णमासी वाले दिन अगर मेडिटेट करते हो तो उसका बिल्कुल ही अलग वो है. एंड आई थिंक अगर क्लास में कोई योगा या मेडिटेटर है तो दे वुड नो कि एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें आपको बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करनी होती, बिकॉज हमारे पुराणों के हिसाब से वो समय रहता है. अगर आप उस टाइम पे मेडिटेशन करेंगे तो आपका पूरा का पूरा आप बैराग्य की तरफ चले जाएंगे. और हमारी लाइफ 4 भागों में डिवाइडेड है, तो आपको वो जो गृहस्थ जीवन है वो उतने साल तक 60 साल तक करना ही है स्पेंड. उसके बाद आप बैराग्य या उस तरफ जा सकते हैं. तो रात का जो टाइम रहता है ना, 11 से 12 बजे का जो पहर है, उसमें मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उसमें आप कंटिन्यूस अगर करेंगे तो बिल्कुल आप डिटैच होते चले जाते हैं. थोड़ा सा कम करो अभी प्लीज, अब आपको सूरज नायर को ज्यादा पढ़ना है. I think that is our generation. I mean, we are in between somewhere. Our parents used to be extremely religious, as we what we call, and our children they are least bothered about all this. तो हम लोग कहीं बीच में बोलते हैं. मुझे तो टाइम लगा वो डेफिनेशन भी समझने में. जी जी, उनका तो अलग ही है. या बिल्कुल जी. थैंक यू मैम. Yes, pleasure. Thank you for asking a very, very relevant question as well. Okay, let's come back to this. Is this visible, Chitra, Saurabh ji? Yes, ma'am. Okay, great. So these are the skills which we develop in a participant when we are using a case study method. We develop curiosity, judgment, character, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन. बिकॉज मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि सारा डेटा जो आपको डिसीजन लेने के लिए चाहिए वो आपको कभी भी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी 100% इंफॉर्मेशन किसी के पास कभी भी नहीं होती. इवन सिंपल डिसीजंस लाइक विच कॉलेज टू टेक एडमिशन इन, आपको ये मिल जाएगा कि भाई पास्ट 5 साल में उस कॉलेज में क्या प्लेसमेंट रही. तो अगर आप 3 कॉलेज कंपेयर कर रहे हो तो आप तीनों का प्लेसमेंट डेटा कंपेयर कर सकते हो, बट स्टिल फ्यूचर में क्या होगा वो डेटा तो आपके पास नहीं है. सो यू विल यूज योर ओन लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स एंड सम काइंड ऑफ इमेजिनेशन दैट आउट ऑफ दीज 3 colleges which one should I take admission in case at least 2 colleges are almost like equal. Okay. And innovation. So further, if we see case study method as a learning tool, it is learning as we gather useful information, which is acquisition of knowledge. So when we say acquisition of knowledge, we learn because we are gathering some kind of useful information. Learning as a process of building competencies for using that knowledge. So when you read a case as a student, you will find that case will have a story. For example, in this case, it was a story of Suraj Nair, Air France. So you get to know about a company, about an industry, about an individual. And then you start to see कि भाई इस इंसान ने जब अपना decision लिया है, तो decision में what all competencies has he used? Has he used his analytical skills? Has he used his marketing knowledge? Has he used his engineering knowledge? So what all knowledge and information he has used
to interpret a solution for the problem at hand. And lastly, learning as a process of developing certain competencies through attitude, skill, habits, and knowledge. If you see here, I have not used the word behavior because behavior is the most difficult thing to change in any human being. We can change the attitude, and that is why we say कि भाई तुम्हारे attitude में problem है, and then we can help the person to change the attitude. कि अगर किसी का बड़ा negative attitude बन गया, we can keep talking to the person, give him certain tools, and we build his attitude from being negative to positive. So attitude is changeable. Behavior is the most difficult thing to change. But if your overall perspective and attitude towards something is positive, for example, between gold and diamond, whether your attitude is more positive toward gold or towards diamond will define which one of these you will buy more, right? Or which one of these you will not buy at all if your attitude towards it is negative. So attitude is something which from an individual decision to a corporate decision is a very, very important aspect of human behavior. And hence, if we are not able to change the overall behavior, we just change the attitude. Second is we change people's skills. So if there is a case study which is talking about how a leader implemented a decision, so we are developing leadership skills in a person. तो एक argument आ सकता है कि भाई leadership skill हमें सबको नहीं देनी है. But at the same point of time, whether in a group, are you able to express your viewpoint? That is also a part of your leadership skill. Are you able to work in a team? So your interpersonal skill and leadership skills, whether you are able to take the team along, all these skills you develop in student over a period of time. So when you give them a task, which is a group assignment, let's say a case study group assignment, these skills are developed. So एक तो हो गया subject skill. But again, if you see new education, national education policy, it clearly talks about more skill-based learning and training. And these skills are more individual human skills. And they are, I think some of you might have attended AICT Higher Human Values, Global Values program. And that also clearly talks about developing these skills in the student. That how do you manage this work-life balance? Now, because of so much of information overload, we see the problems which were never there in the past when we were kids. We see those problems more often now. These students are more connected on social media rather than in person. हम लोग जाके पार्क में ज्यादा खेलते थे, ग्राउंड में ज्यादा खेलते थे because video games नहीं थी. But now students, individuals, kids, they are more playing on screen. आप घर पे जाते हो ऑफिस से, फोन रखते हो, आपका छोटा बच्चा 2-3 साल का सबसे पहले फोन उठा के गेम्स. सबसे ज्यादा स्मार्ट जितना छोटा बच्चा होगा उसको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि आपकी स्मार्टफोन कैसे ऑपरेट करना है. So it is somewhat become very important to just not focus on your subject related skills, but overall holistic skills as well. So we develop learning tools like that, which helps us to groom an individual beyond subject, right? Which helps us to also shape individuals' habits and hence overall knowledge. So that is the key objective. Learning is in case method is through reading the case. Then we listen to multiple solutions which different participants are giving. We observe and then we reflect on those observations. So management cannot be taught, but it has to be learned by individual. So as a faculty, you have to change your paradigm from student to people who are participating in that learning journey. So this is how you need to reposition your course. So your course is a journey and your students are your co-participants in that journey. So you have to take them along. And if we start treating ourselves as more of trainers and facilitators in the process of this learning and not just teachers who are teaching. Some of the skills let's highlight which we develop
through case study method are analytical skills and conceptualization. Analytical skills are when you do the same thing over and over again in combination of multiple lectures and cases. For example, पहले हम मैथ्स में या इस टाइप के सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स करते थे एंड सेम टॉपिक के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करते थे and we used to solve those questions in multiple lectures so that we master a particular concept. It is almost the same thing which we do, for example, break-even analysis or maybe any other financial analysis, let's say using game theory or using Bayesian approach. When we use some of these methods, we are developing the analytical skills of the student. हो सकता है उसने वो concept किसी और subject में पढ़ा हो, बट उसने मेरे सब्जेक्ट में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया. जब अप्लाई करा आपकी वो वाली चीज वापस से रिवाइज होगी. जितनी बार से कॉन्सेप्ट को आप एप्लीकेशन ओरिएंटेशन से यूज करते हैं वो आपको कभी नहीं भूलेगी. सो इट जस्ट सेट्स इन योर माइंड एंड इट इज डीप रूटेड एंड डीप सेटेड. स्टूडेंट विल नेवर फॉरगेट दैट कॉन्सेप्ट. सेकेंडली, because of conceptualization and analyzing, we further develop skills. For example, how do you capture brand experiences? Who are you in the case situation? We ask students to discuss and we ask a participant to deal with as many numbers as possible. So case में बहुत बार data होता है, numbers होते हैं, and we want participant to remember those numbers. So in a way, his memory is also getting sharpened because of the case. So case is like a story and he will remember who is the main decision maker or protagonist in that story, what is the context, what is the dilemma, what is the problem, and what could be possible solutions of the problem. So these possible solutions he will discuss within the group and then with the class. So the emphasis during the process should be students must be involved in the case as much as possible. They should feel the responsibility and urgency of taking a decision. कि भाई बिना decision के तो loss होगा, right? So ये भी नहीं हो सकता कि आप कोई decision ना लो और decision पे बैठे रहो. It is not possible. So students should feel that how important it is to take a right decision at the right time. For example, अगर आपने college admission का decision एक particular college की last date of एप्लीकेशन के बाद में लिया तो कोई फायदा नहीं हुआ ना उस डिसीजन का. सो यू नीड टू टेक अ रिस्पॉन्सिबल डिसीजन इन द टाइम फ्रेम. इफ यू टेक अ डिसीजन बियॉन्ड दैट टाइम फ्रेम, it can be a loss. It can be a loss to the company. It could be that you lose on that window of opportunity. Okay. Last is the teacher should not assume the historical role of being a fountain of knowledge. Rather, we should act as facilitator in the participative process. So generally, we try first कि जितने solution आ रहे हैं, let the solutions come in. We do not just discard the solution. अगर हमें लगता है कि एक बहुत ही बेकार वाहियात सा solution है, even then we do not tell right away. We keep noting down those solutions on the board and then we ask more questions. कि अच्छा आपने ये बोला, how do you think this is possible? How will you implement this decision? Do you think this decision can be implemented? Okay, tell me what will be the problems which you will face if you want to implement this decision. It means if you have 1 month to execute the decision or the solution, whether this solution which you are providing can be implemented in that 1 month time window. So this is how you ask more questions from the student and let them come back. Okay, no, I think the solution which I gave is not appropriate. So let me rethink. So rather than you discarding, okay, you have given a wrong answer, case study approach gives you a flexibility where you can ask more questions related to the solution and make the student, the participant realize that whatever he said has some issue and he would reflect on his solution further to improve it. Any questions so far?
So I want to finish this in another 10-12 minutes so that we can shift on Zoom in the second part, because that's more about the writing of case. So that I want, even if in this class there are 5-6 people who decide to take up writing of a case later on, I will be happy to mentor and assist and be a participant in your case writing journey. So what we have discussed till now, why we use a case method, because it helps us to translate knowledge into action. It is an opportunity to analyze. It gives a student, a participant, an opportunity for self-determination. They determine the multiple solutions on their own. It gives us to help them getting exposed to multiple situations. It gives a participant a scope for creativity. It also inculcates the habit of careful reading to a student. And then it is learning which becomes challenging, and you develop a logical reasoning and effective communication. Just give me one second. Sorry, these are hazards of work from home. I had a bit of cold because of heat stroke, तो आज मैं कॉलेज से इसलिए नहीं लॉग इन किया. और घर पे बैठे हो तो कोई ना कोई डिलीवरी वाला आ रहा है, कोई आ रहा है, तो sorry about that. Okay, so let's quickly look at the type of cases, and then we'll move on to the others. Okay, so there could be case illustrations. The 4 main types of cases. It could be a case illustration. It could be a case which is a problem based. Illustration हो गया कि जैसे historical case है कि the making of Tata as a brand, what it is today. तो उसमें बताया जाएगा कि भाई टाटा कब शुरू हुआ था, तब से किसने who were the CEOs of Tata, then in which all year they expanded, they opened new companies. पहले टैस होता था, then they opened Tata, this is TCS, and then other sister concerns of Tata. From Tata Steel to today, how many multiple companies and SBUs they have. So it's a historical case, and then we learn multiple things from a historical case. So I'll come to it, that how do you as an instructor decide कि उस case से हमें क्या पढ़ाना है. So one case, which is let's say 2 or 3 page, can be used to teach more than one subject sometimes. So the same case of Tata can be taught by a strategy professor to teach merger, acquisition, and expansion. Which are the companies which Tata bought in between in these years? Which are the companies they have had joint ventures? Which are the companies they have had some kind of strategic alliance? तो आपको अगर strategy के कुछ concept पढ़ाने, वो भी आप उस केस से पढ़ा सकते हो. आपको अगर leadership पढ़ानी है, तो आप ये देखोगे chronology who had held leadership positions in Tata, और सबका leadership style क्या था, आप वो भी पढ़ा सकते हो. So the idea is case एक लिख रहे हो आप, but you can have multiple teaching notes of that case. If somebody is a strategy professor, can use this case to teach this. If it is a case of advertising and there is a mathematics or statistics professor who wants to teach Bayesian approach, तो आप same advertising case को advertising पढ़ाने के लिए भी use कर सकते हो. उसको आप Bayesian approach in management application के how a marketing or advertising manager will use Bayesian approach to decide on the advertising expenditure, something like this. So imagine the power of a case. Same case can be taught in multiple ways to teach multiple concepts in different subjects. तो आप एक ही चीज, मतलब एक तरह से एक ही आपने 8-10 पेज लिखे, बुक में क्या होता है, एक बुक से आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो. But the beauty of case is that you can teach multiple subjects and multiple concepts using the same case.
Secondly, there are problem cases which are primarily revolving around a problem. तो हमने जो सूरज नायर का केस देखा, it is a problem case because उसमें प्रॉब्लम है कि आपके एक तरफ कस्टमर बहुत ज्यादा है, एक तरफ नहीं. So this is a problem which needs to be solved अगर हमें रेवेन्यू बढ़ाना है. तो बड़ी क्लियर कट प्रॉब्लम निकल के आ रही है. थर्ड हो गया cases which are basically case studies. So for example, the initial success and then failure of Tata Nano. So it's a simple case study which you will see कि कैसे उन्होंने लॉन्च किया, ऑब्जेक्टिव क्या था, विजन क्या था, बट शुरू में सेल्स हुई बट उसके बाद मल्टीपल प्रॉब्लम्स आई एंड देन हाउ द प्रोडक्ट फेल्ड. सो यू कैन use this case study to teach both success and failure and reasons of failure, right? Then there could be case projects where you give a project to certain group of students कि भाई जाओ, for example, I remember I did my MBA from Kurukshetra University और उस टाइम में थोड़े टीचर्स प्रोफेसर्स अलग टाइप के होते थे. उन्होंने हमें बोला कि आप जाओ आसपास कुरुक्षेत्र के कोई भी एक कंपनी ढूंढो और सुबह से शाम तक वहां पे बैठ के वहां से अपनी ऑब्जर्वेशन और एक रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है. सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड सी योर फेसेस. या सो बड़ा इंटेंस. हमें पहले तो समझ नहीं आया कि भाई कुरुक्षेत्र में कहाँ से वहां क्या आपको इंडस्ट्री, तो बड़े बड़े ब्रांड नेम्स तो थे नहीं, तो कोई राइस शेलर मिल गया, कोई इस तरह की छोटी छोटी जो कंपनीज थी. सो as a group we identified, so one of our classmate, one of his father's friend had a rice sheller. तो उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है, अब वहां जाके अब सर ने दिया असाइनमेंट तो करना है. अच्छा थोड़ा सा ना आई थिंक हम लोग ऑनेस्टली करते भी थे, तो डिफिकल्ट असाइनमेंट दो जिसमें बच्चे गूगल से ढूंढ के ना कर ही ना पाए. सो गिव दैट काइंड ऑफ असाइनमेंट. तो मुझे लगता है टीचर को जो सैलरी मिलती है ना, वो आई थिंक पेपर चेक करने की नहीं मिलती, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट करने की मिलती है. So the more you set a question like this कि भाई उसको कितना ही गूगल कर ले, ये कर ले, उसको इसका सवाल नहीं मिलेगा. You are asking such an application based question कि उस बंदे को सोचना ही पड़ेगा कि जो उसने पढ़ा है उसको सोचेगा, इंटरप्रेट करेगा, फिर आंसर कर पाएगा. That is the power of setting up a question paper. So we went to this rice sheller. 4 of us were in a group. We were put in a group and we sat. फिर हमने वहां जाके देखा भाई इनका एक तो वो शॉप फ्लोर सा एरिया है, तो वहां पे मतलब वो मिल चल रही है, वहां कुछ लोग काम कर रहे हैं. तो हमने कहा ठीक है, तुम एक जने की ड्यूटी वहां लगा दी, तुम यहाँ बैठो और भाई 4-5 घंटे हम रुकेंगे तो देखना क्या क्या होता है यहाँ, राइट योर ऑब्जर्वेशन, रिपोर्ट बाद में देखें. तो इसी तरह से एक चला गया जहाँ पैकेजिंग हो रही थी. भाई वो राइस शेलर में आप वो जीरी मतलब राइस निकाल के जीरी में से, और वो घास फूस अलग हो जाती है तो वो अलग पैकिंग होती है और ये अलग पैकिंग होती है. तो उसके बाद कुछ पॉलिशिंग के लिए जाता है, जो आपका टूटा वाला दाना है वो अलग जाता है. सो ऑल दैट. सो 1 person was in packaging. एक बंदा ऑफिस में चला गया कि अकाउंट्स में क्या हो रहा है, और एक कि भाई आप कुछ मार्केटिंग करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ करते हैं, कुछ ब्रांडिंग करते हैं, वो जानने के लिए वहां बैठ गया. तो चारों लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटीज असाइन कर ली. एंड यू विल नॉट इमेजिन इन दिस प्रोजेक्ट वी लर्नड अ लॉट इन दोज 4-5 hours बिकॉज हम कहते हैं कि शी पॉलिसी है, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट पॉलिसी. हाउ अब आपने एक तो क्लास में पढ़ा दी, बट द आइडिया वाज आर्स वाज द ओनली असाइनमेंट जिसमें जो शॉप फ्लोर पे जहाँ पे शेलर चल रहा था वहां पे सिर्फ 2 फ्रेशर फैन लगे हुए थे बड़े बड़े, एंड देयर वर एटलीस्ट 40 employees who were working in the sheller. So when we wrote this in the assignment, teacher discussed it in the class and said it means as per the SHE policy 2 fresher fan are not sufficient for the health and hygiene condition of people working on the shop floor. फिर उन्होंने SHE policy introduce की. So imagine one assignment, such assignment which you have given to student, which is just आप student को नहीं पता कि भाई वो, अब हमें उस टाइम नहीं पता था SHE policy क्या है. But even today, I am not a HR faculty. I am not into social sciences. I am not into public health. But still, I cannot forget that concept because it was taught in a practical manner through a project by the teacher. So that is the power of a case project. And frankly speaking, हमारे यहाँ तो बाद में वाइस चांसलर बने MD यूनिवर्सिटी से, अगर कोई है तो जानता होगा, प्रोफेसर RP हुडा हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे. सबसे खूंखार टीचर थे क्लास में,
और मतलब अगर आपने अच्छा काम किया तो ही विल, मतलब वो ऐसे डिपार्टमेंट में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में भी आप खड़े हो तो आवाज लगा के बुलाते थे, यस यू डिड दिस, एंड देन ही वुड इंट्रोड्यूस टू एवरीबॉडी कि इसको ये काम दिया था, इन्होंने ये किया, एंड ही यूज्ड टू मतलब वो धज्जियां भी बिल्कुल पब्लिकली उड़ाते थे और आपकी प्रेज भी पब्लिकली करते थे। वो मतलब कहते हैं ना हमारे यहाँ हरियाणा में बिल्कुल जो मुंहफट, दोनों ही सेंस में बिल्कुल मुंहफट थे, वो तारीफ भी खुल के करते थे और आपकी धज्जियां भी, मतलब लोगों को लिटरली हमारे डिपार्टमेंट में डर लगता था उनसे, स्टूडेंट्स को, कि अगर हुडा साहब ने देख लिया तो बस मिट्टी पलीत है। एंड स्टैटिस्टिक्स वो पढ़ाते थे और इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने पढ़ाया, प्रोजेक्ट असाइनमेंट देके, कि मतलब हमें कभी लगा ही नहीं कि स्टैटिस्टिक्स इतना बोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें बस बैठ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या आजकल तो चलो SPSS वगैरह आ गया है, उस जमाने में SPSS वगैरह नहीं होता था, बट इवन देन थिंग्स वर टॉट इन सच अ डिफरेंट वे, in form of very difficult, very participative, interesting assignment कि आपको ग्रुप में काम करने को मिल रहा है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, you are learning by observation, you are learning through projects and assignments, you are not mugging up, और वो वाली जो लर्निंग है ना वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। सो टीचर एंड इमेजिन, मतलब मैं आज बैठ के अगर हुडा सर को याद करूं, आई माइट नॉट रिमेंबर ऑल द टीचर्स हु हैव टॉट मी, but I will remember those teachers who had given me those kind of assignments. So ये वाली assignment कुन्नू साहब ने दी थी, even he became I think Dean of Haryana School of Business in Jambeshwar University later on. He taught us in from 96 to 97. 97 when university was formed, then he shifted there. So all these teachers were, way ahead of their times. And even today, one has to be ahead of the times. So आपके साथ के 10 लोग क्या कर रहे हैं, आप exactly वही चीज करेंगे तो आपकी टीचिंग और किसी और की टीचिंग में कोई फर्क नहीं है। What is that one thing which you are doing differently? मैं ये नहीं कह रही कि एक सब्जेक्ट में आप 10 चीजें अलग करो, बट 2 चीज ऐसी करो which जो आपके स्टूडेंट को हिला दे इन द सेंस कि मेंटली उसको इतना चैलेंज करे that he has to go do something on his own, learn, come back, should be so happy about कि भाई मैंने ये करा तो मेरे को क्या मिला, should be eager to share that in the class and motivate these things, because the more they share, they will be much more confident of what they have learned. So that's the power of teaching. And I think with the way we are moving ahead in terms of the new education policy, we should be able to achieve this. Okay. Any questions so far, please? Anyone? I hope people are active और खाना उनके दिमाग में नहीं चढ़ गया and people are not sleeping. I'm not that boring. Please, some action. कुछ वीडियो ऑन कर दीजिए तो थोड़ा पता लगे कि आप लोग जगे हुए हैं. So, ma'am, it may sound like a silly question, but can the case be an imaginary one, or it needs to be reality based? देखो, इमेजिनरी हम इसलिए नहीं करते बिकॉज इमेजिनरी केस में ना वो कभी भी पावर ऑफ रियल प्रॉब्लम नहीं आएगा. जैसे हमने इलस्ट्रेटिव केसेस किए तो इलस्ट्रेटिव मीन्स कि उस, एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन व्हाट वर्क्स बेटर फॉर यू. ठीक है, फिक्शन इज गुड कि भाई अपने आपका मतलब मूड इलेट करने के लिए आपने फिक्शनल स्टोरी पढ़ ली, यू फील हैप्पी अबाउट इट, योर मूड गेट्स अपलिफ्टेड, बट वी डोंट लर्न एनीथिंग मच from fiction. But if you read an autobiography of somebody known, we might take away 1 or 2 things. So that is exactly the difference between a fictional and non-fictional cases. So we do make changes in certain cases. जैसे data है, अगर कोई कंपनी नहीं चाहती, जैसे फ्लिपकार्ट का अगर केस लिख रहे हैं तो they might not want कि हमारे real percentage in terms of pricing या ये चीजें बाहर जाएं, तो हम उसको एक पर्टिकुलर, जैसे मैथ्स में होता है, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बट वी स्टिल मेंटेन द ट्रेंड कि अगर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड रेवेन्यूज 3% का मार्जिन आ रहा है तो हम डेटा चेंज कर देते हैं, बट मार्जिन फिर भी 3% रहेगा, सो दैट स्टूडेंट शुड गेट द रियल हैंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सोल्यूशन. दे कैन थिंक अच्छा ठीक है फ्लिपकार्ट ये कर रही है, या
Amazon ये कर रहा है, तो दोनों में से कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा, किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, ऑल दोज प्रॉब्लम. So because student is able to visualize these things, hence he will be able to solve problems in a much better way. Because उसको पता है कि ये कौन सा ब्रांड है, उसको पता है ये कौन सी कंपनी है, राइट? उसी में अगर फिक्शन होगा तो दे कांट यूज इमेजिनेशन के ये कैसी कंपनी है, ये कैसा ब्रांड है. बट अगर रियल कंपनी है तो स्टूडेंट्स जनरली गो ऑनलाइन ऑल्सो, दे सर्च अबाउट द कंपनी. इवन इफ इट इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, दे वुड स्टार्ट टू know little more about the company and the case in context. So that is the difference. Okay, just so I'll take 10 more minutes. So एक बार case का वो कर लेते हैं and then we'll go to we'll finish this and then we talk about case writing in the second part. Is this visible, Chitra? Okay. Yes, it's visible. डिफरेंस आपको क्या देखना है अगर आप ये केस देखेंगे. नाउ लेट मी मिनिमाइज इट अ बिट. अभी इसे पढ़ना नहीं है, मैं आपको दे दूंगी. आपके पास कुछ भी क्वेश्चन कुछ होगा, आई विल गिव यू माय ईमेल आईडी. यू कैन प्लीज रीच आउट टू मी, आई विल रिवर्ट टू यू. सो केस अगर आप देखें केस में हमने पहले पैराग्राफ में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बताया, किसको डिसीजन लेना है ये बताया, और क्या प्रॉब्लम क्वेश्चन है. क्लियर हो गई सिचुएशन बिल्कुल फर्स्ट उसमें. फिर हमने इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का बैकग्राउंड दे दिया कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या हो रहा है इसमें. सो ये सब उस डेट का रियल डेटा है. अगर आप नीचे देखेंगे, ये मैं केस राइटिंग जब बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी भी. देखिए नीचे हमने पूरा किस डेट को कब एक्सेस किया है, ये सब फुटनोट में केस में देना बहुत जरूरी होता है. कौन सी डेट तक का डेटा है देखिए, है ना. मैंने किस दिन एक्सेस किया केस लिखते हुए, एक्सेस्ड ऑन August 4, 2017 from this page, so that tomorrow if any one of you or a student wants to see this report can click on that and the report will be, sorry क्या किया मैंने, the report will be visible to that individual. Yeah. Okay. So now if you see this, after giving the aviation industry background, then it is about the evolution of travel classes in airline. कि भाई business class है, उसमें first class है, economy है, क्या है. हमने उसके बारे में बता दिया कि कौन सी एयरलाइन ने सबसे पहले ये, तो आपने थोड़ी सी हिस्ट्री दे दी. फिर हमने उन क्लासेस को डिफाइन किया कि बिजनेस क्लास, एयर ट्रैवलर्स, उनकी क्या. फिर एयर फ्रांस का कंपनी के बारे में बताया. फिर एयर फ्रांस कंपनी इन इंडिया क्या है, कब एस्टैब्लिश हुई, उसका बैकग्राउंड दे दिया. इन बिजनेस क्लास ऑन एयर इंडिया, सॉरी एयर फ्रांस इन इंडिया, फिर क्या चैलेंज है, क्या क्वेश्चन है. एंड देन ये हमने फिर थोड़ा सा डेटा दिया. सो दिस डेटा इज एक्सेस्ड, इसका भी पूरा सोर्स है. एग्जिबिट 2 इज अबाउट फीचर्स अवेलेबल इन इकोनॉमी, प्रीमियम एंड बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास, कि भाई इन सब में कहाँ क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. क्योंकि सीट में, सीट के साइज में, पिच में, देन लैपटॉप मोबाइल का पावर, वीडियो टाइप क्या है, वाईफाई अवेलेबल है या नहीं, सीट टाइप क्या है, कोई और स्पेशलाइज्ड सर्विस किसी पर्टिकुलर क्लास में मिलती है, और किस तरह के कस्टमर है, राइट. सो ये सारा डेटा दे दिया विच विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट टू विजुअलाइज एंड डू हिज एनालिसिस. थर्ड एग्जिबिट दिया एयर फ्रांस एंड कॉम्पिटिटर स्टैटिस्टिक्स, एंड देन एयर फ्रांस इंडिया परफॉर्मेंस इन 2014-15, क्योंकि 16-17 में केस लिखा है, तो जिस ईयर तक का डेटा अवेलेबल था वो हमने दिया. दैट इज इट. नाउ इफ यू सी, ये कितने पेज का केस हुआ, 11 पेज का. You will be surprised कि इस केस को पढ़ाने के लिए जो हमने टीचिंग नोट लिखा, टीचिंग नोट होता है कि कल अगर मैंने जो केस लिखा है वो अगर आप में से किसी को भी यूज करना है पढ़ाने के लिए, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कैसे पढ़ाना है, राइट. बिकॉज आपने तो लिखा नहीं है. सो एवरी फैकल्टी हु इज राइटिंग अ केस विल ऑल्सो राइट अ टीचिंग नोट दैट this case can be used for teaching so and so. So I'll show you a copy
of the teaching note of this case. Is this visible? थोड़ा सा बढ़ा देते या तो इसमें पहले हमने साइनॉप्सिस दे दिया टीचिंग नोट में. फिर अब जब भी हम कोई भी चैप्टर प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाना. तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इस केस के थ्रू हम क्या पढ़ा सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन कर दिए. तो कल अगर आप में से कोई भी या वर्ल्ड में कोई भी टीचर इस केस को यूज कर रहा है वुड नो कि इस केस को पढ़ा के, इस केस के थ्रू पढ़ा के हम क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट के साथ अचीव कर सकते हैं. So after completion of the case, student will have developed their analytical and strategic decision thinking skills, specifically in terms of customer acquisition when targeting customer of premium services, co-branding and direct marketing of premium service and brand management, concept of consumer behavior and marketing strategies in Indian market. ठीक है, उसके बाद हमने position in the course क्या है. Ma'am, do we anywhere mention the possible solutions as well? Yes, I'm coming to it. देखिए ये जो टीचिंग नोट अगर आप देखेंगे, केस था सिर्फ 11 पेज का, जिसमें 2-3 पेज लास्ट के एग्जिबिट थे. यू रिमेम्बर? टीचिंग नोट 15 पेज का है. केस से लंबा आपका टीचिंग नोट है. क्यों? बिकॉज द सेम केस कैन बी यूज्ड वन टू टीच मल्टीपल कॉन्सेप्ट. अब हो सकता है आपके सिलेबस में, कल आप मार्केटिंग पढ़ा रहे हो, आपके सिलेबस में हो सकता है ये सारे टॉपिक नहीं हो, तो आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ाने हैं कि मुझे ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ाना है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाना है और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पढ़ाना है. ये 3 टॉपिक पढ़ाने के लिए हो सकता है मैं सारे क्वेश्चन नहीं यूज करूं, राइट? सो दीज आर असाइनमेंट क्वेश्चंस व्हिच अ इंस्ट्रक्टर विल गिव इन द टीचिंग नोट. देखिए, कैन यू सी दीज 6 क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Great. So in assignment questions you have these different questions. Now depending on कि आपके सिलेबस में क्या टॉपिक है और आपको इनमें से कितने पढ़ाने, जरूरी नहीं आप 6 के 6 पढ़ाएं, आप हो सकता है 3 पढ़ा सकते हो. So when you are giving the case to the student to read, you will give him the assignment question कि भाई ये केस पढ़ के ये 3 सवालों के जवाब आप ग्रुप वाइज ढूंढ के लेके आइए तो क्लास में डिस्कस करेंगे. Then this is the teaching plan which we गिव टू द इंस्ट्रक्टर कि कल कोई भी टीचर इस केस को यूज कर रहा है तो वो टीचिंग अपनी कैसे प्लान करेगा. right? अब हम टिपिकली ये 90 मिनट्स की क्लास के लिए करते हैं. इन केस यू हैव अ क्लास विच इज 1 hour 15 minutes और 1 hour, accordingly you can drop 1 or 2 topics in this. तो क्लियरली डिफाइन किया है द सजेस्टेड क्लास प्लान इज सुटेबल फॉर 90 minutes. केस इंट्रोडक्शन आप 15 मिनट में करोगे. फिर कस्टमर बिहेवियर इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि हमने एयर फ्रांस की बात की तो एयर फ्रांस का हमने ग्लोबल पहले दिखाया, प्लस ग्लोबल डेटा की बात की, और फिर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक दैट ऑफ इंडिया. तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, प्राइस सेंसिटिविटी है, कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट है, वो सारा चीज हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे. तो 10 मिनट इसका. देन द चैलेंजेस फेस्ड बाय सूरज नायर, 10 मिनट उस पे. Allocation of promotional budget 20 minutes, फिर 15 minutes, 10 minutes, like this. And then you have answers to the questions. ये पूरा solution उसमें रहेगा. Can you see this when I'm scrolling down? ठीक है? Simple things like unique communication style के social niceties such as saying thank you and please are not used as frequently in India as in other cultures. So Indians have difficulty accepting a no as an answer. Instead, they appreciate attempt to find all the alternatives available. Again, body language हमारे लिए बड़ी important है. हम बहुत straight forward लोग नहीं है. तो अगर कोई straight forward कोई चीज अगर एयरलाइन में नहीं है, आपने कोई मांगा और आपको एयर होस्टेस ने मना कर दिया तो आपको बुरा लगता है, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में हो. So people were trained in Air France flights कि Indians behave like this, they are culturally different and hence thank you please के बजाय आप कम से कम no use करेंगे. और अगर कोई चीज नहीं है आप उनको बजाय इसके कि ये नहीं है, उनको बोलो कि सर this is right now not available but I can give you an option of these. आप उसी टाइम immediately साथ में ऑप्शन दे देंगे तो कस्टमर आपसे नाराज नहीं होगा. Customer will not be dissatisfied and customer will appreciate कि आपने उसको option दिया. So these were some of the solutions which were given
सिमिलरली क्वेश्चन 3 की हमने 3 ऑप्शन दे दी कि ऑप्शन 1 भी सॉल्यूशन हो सकता है, ऑप्शन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और फिर तीनों की एक्सप्लेनेशन कि ऑप्शन 1 के क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, ऑप्शन 2 के क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, ऑप्शन 3 के क्या प्रोस एंड कॉन्स है. तो इस तरह से अब क्या है, हो सकता है कोई मैनेजर के लिए किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के जो कॉन्स है, मतलब उसकी जो नेगेटिव चीजें वो बहुत मुश्किल है इंप्लीमेंट करने के लिए, तो हो सकता है वो इसीलिए ऑप्शन 3 में ना जाके ऑप्शन 1 या 2 में से चूज करेगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, कोई ऑप्शन नहीं हो सकती वर्ल्ड में कि उसकी कोई नेगेटिव साइड ना हो. इट जस्ट द मैटर ऑफ नंबर्स कि हो सकता है किसी ऑप्शन के कम कौन साइड है कंपेयर टू द अदर ऑप्शन, बट एवरी ऑप्शन इन दिस वर्ल्ड विल हैव अ प्लस और माइनस. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने IIT त्रिची में एडमिशन लिया है, ठीक है, NIR रैंकिंग अच्छी है, इंस्टीट्यूट अच्छा है, सब कुछ, बट अगर नॉर्थ का बंदा है तो हो सकता है उसको फूड का इशू है, तो कौन साइड हो गया ना उसका. डिस्टेंस का इशू है कि अगर 2 दिन 3 दिन का भी वीकेंड है तो वो अपने पेरेंट्स से मिलने शायद 3 दिन की छुट्टी में नहीं आ पाएगा. इफ यू आर स्पेंडिंग एयर पे या ट्रेन में तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं. एयर में भी फिर उतना स्पेंड करके not every family and every kid will have that kind of background to spend that much. So these become a con side for somebody who's considering to take admission from north to a good college. So sometimes you make a choice of a college which is equally good, maybe a bit ऊपर नीचे in terms of ranking, but पढ़ाई ठीक है plus distance to your hometown. Sometimes this become very, very important factor. So similarly, when we are analyzing pros and cons, we will see what are the most important pros and cons for a particular option, which I as a manager can implement. So like this, you have answers to. So question number 5 was more around co-branding. Co-branding, direct marketing, हमने यहाँ पे अब marketing strategy की भी 3 ऑप्शन है. So 3 options you have discussed. Then question 6 में solution देने के बाद फिर हमने ये भी दिया है कि एक्चुअली कंपनी ने कौन सा solution implement किया, what happened, हमने वो भी लिखा है. ठीक है, उसके बाद ये हमने 3 टीचिंग नोट बना दिए, टीचिंग नोट के एग्जिबिट, कि ये ऐसे के ऐसे आप इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी स्लाइड में डाल सकते हो. एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन इन द क्लास, you can show this ANSOF matrix. हमारे यहाँ मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है. So rather than teaching a student ANSOF matrix in a theoretical way, we have used here a case study approach to teach ANSOF matrix, which is taught in both marketing as well as strategy. Strategy में ये diversification strategy में use होता है, marketing में ये when you are creating variants of services, तब हम ANSOF matrix use करते हैं. Similarly, impact of various marketing strategy on Air France India's option for premium services. तो ये भी हमने टीचिंग नोट, और नीचे देखिए लिखा है developed by authors. ठीक है. Similarly, last exhibit है customer value pyramid. Now this has been adapted from this paper, which was by Ziethmal, Roland Rust, and Lemon. And it was given in California Management Review. So this was an old paper in 2001. We used the matrix which was given in the paper to define the frequent and the repeat, 2 different types of customer in Air France. तो हमने value pyramid का concept लेकर के Air France के context में how they have created this value pyramid for their own customers, वो हमने बना दिया. Now student will never forget the value pyramid, बिकॉज उसको एयर फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि कैसे 2 तरह के फ्रीक्वेंट फ्लायर है तो उसको कैसे डिस्काउंट मिलेगा, रिपीट कस्टमर आ रहा है, एंड हेंस देयर इज मोर वैल्यू. You add your points and then you can convert those points later on in your miles. So this is how, and this is the last matrix which is about customer acquisition process model. हम इसको funnel approach भी बोलते हैं. So some people in management and कॉमर्स विल नो व्हाट इज अ फनल अप्रोच. तो उसमें सेगमेंटेशन, टारगेटिंग आपने कैसे किया है, बिल्कुल एयर फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में कस्टमर एक्विजिशन की बात की है. तो एक तो हो गया आपने कस्टमर एक्विजिशन, व्हाट इज कस्टमर एक्विजिशन, व्हाट आर द डिफरेंट
कंपोनेंट्स ऑफ कस्टमर एक्विजिशन आपने थ्योरी की तरह करा दिया, बच्चों ने सुना और 60% स्टूडेंट क्लास के बाद भूल जाएंगे. बट इफ द सेम topic you have taught using a case and in this form using Air France as an example, student will never forget. And this is the last model, which is international product and promotion strategies. तो ये भी अगर हम कीगन या कोई भी बुक देखें तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में हमेशा 5 बॉक्स का एक मैट्रिक्स बना होता है. What we have done is we have used the same matrix to create a matrix for Air France promotion and product. कि हम प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे, प्रमोशन में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो क्या स्ट्रैटेजी है. सो लाइक दिस यू हैव क्रिएटेड 5 डिफरेंट प्रमोशन स्ट्रैटेजीज फॉर एयर फ्रांस. सो इट्स अ डायरेक्ट यूज ऑफ थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट यूजिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एयर फ्रांस. तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि बहुत थ्योरी हो रहा है क्लास में, हमें टीचर एग्जाम्पल नहीं देता. So all these things are automatically taken care of because you are using an example throughout the class to teach multiple concepts. That's the power and beauty of using any types of case study approach. So as I said, it could be in the form of a case project. It could be in the form of a historical illustrative case. It could be a problem-based case like we used here. And it could also be a case where you just give an assignment or a project where you tell students to go and just observe and submit a report. And then it is up to the teacher that how do you pick that report and teach कि अच्छा आपने ये देखा तो उसका मायने ये है. And she policy should be implemented. Otherwise, there is a legal binding on organization. So tomorrow, if this student is setting up an entrepreneurial venture, he would know मुझे क्या क्या चीजें. So कुछ उसने जो पढ़ा है, he would go and implement it in his own experience. Okay, so let's take a 15-minute break and then we come back. I am not signing out from here. मैंने एक बार आपको Zoom link बना के. Ma'am, I have a question. Yes, please, Chitra. Ma'am, are these different documents, the case and the teaching? These are two different documents. Yes, their And product number will be different. Yes. And do you anyhow get it published? The Yeah, cases? this is published. Yes. Okay, so you just send We the case for publication and not the teaching note. Both. You send both the things for publication. We send both. So teaching note is not accessible to students. So if you will go online, I will share the link to you. If you go online, until unless you have a premium instructor access, you will not be able to access any of these because these are paid material. That's one. So we get a royalty on it. जैसे आप बुक लिखते हो तो उस तरह की रॉयल्टी मिलती है. प्लस इन योर रिसर्च जो आपके होते हैं ना, एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट जो हम बोलते हैं, साइंटिफिक प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट, उसका अलग NIRF में है ना. सो केसेस आर ट्रीटेड एज साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स. So where can people from the field of social media सोशल मीडिया में तो बहुत केसेस है, बहुत केसेस आ रहे हैं अभी. सोशल मीडिया, लिबरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, लॉ. एनीबडी इफ इन दिस क्लास इज टीचिंग लॉ में अब इतने केसेस है बिकॉज नाउ वी हैव एटलीस्ट 2 courses around law even in management education. In any education you see, you are setting up a business, you need to know basics of law. And most of these topics are taught through cases now, rather than. I teach media ethics and law, so I can relate to this kind of case study writing in that. But what kind of journals accept these case? There is a specialized journal, in fact, Emerald का है, which is emerging markets cases. तो वो इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी मतलब कंट्रीज हैं इधर के, साउथ ईस्ट एशिया, उनके डेवलपिंग कंट्रीज के वो केसेस एक्सेप्ट करते हैं. But they must be working in commerce only or in management. Do they? No. Ethics, CSR, law, maths के इतने टॉपिक्स हैं. आप इसमें I will show you the link and I will share it in my presentation also so that you can go back and you can see, because बिना पेमेंट के आपको you will be able to access the abstract.
And if you have a email ID which is an official email ID of yours, जैसे कुछ भी ac.in या edu का अगर आपका email ID है, plus your name is there on your institute website. These are 2 requirements. वो इन 2 चीजों का link मांगते हैं, and you can get a premium instructor access. So next session में मैं एक बार login करके दिखा दूंगी. तो Harvard and Ivy, these are 2. Yeah, सौरभ जी मैं आ रही हूँ. I will just complete this. So you have 2 case repositories by the name of Ivy Publishing and Harvard Business Publishing, जहाँ पे आपके केसेस एक बार पब्लिश हो जाएं तो ये दोनों एक तरह से ना मतलब जैसे हमारे यहाँ अगर हम कह दें कि एक कोई बुक स्टोर है, so these are online book case stores. Okay. अगर आईवी की मैंने जैसे केस छापा है आईवी में छापा है, लेकिन मेरा केस आप हार्वर्ड की साइट से भी जाके देखोगे तो वहां भी आपको नजर आएगा कि ये $4 या $6 पर पार्टिसिपेंट है. टीचिंग नोट इज ओनली एक्सेसिबल टू इंस्ट्रक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इफ यू आर यूजिंग यू वांट टू यूज, और जैसे जब तक आप पढ़ा नहीं रहे हो उस केस से, आपको सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए अगर केस डाउनलोड करना है तो एक इवैल्यूएशन कॉपी आपको मिल जाती है, जो मैं कॉपी दूंगी. उसमें भी क्रॉस में ऐसे डू नॉट कॉपी एंड वाटरमार्क रहेगा उसमें, डू नॉट कॉपी एंड डिसेमिनेट. So until unless you buy a copyright के आपने ये अगले 3 महीने इतने स्टूडेंट्स के लिए यूज करना है, you will not be able to distribute it to students, but you can use it for your own evaluation as an instructor. So I'll be thankful if you could share the name of that journal. I will share. Thank you so much. Requirements भी रहती हैं, plus if we organize any of these kind of workshops, which is a specialized 3 to 4 day workshop only for writing cases. We do that for faculty members at MDI. So whenever we do it in collaboration with the journal. So you work and hands-on, you work on the case. We arrange a visit to the company. You can collect data and then you work in that team after completing the workshop for next 1 or 2 months with a mentor, and you publish those cases. So we have published many cases like that as well. Right. Thank you. जी सौरभ जी. सॉरी मैडम, सुभाष. सॉरी सुभाष. मैंने मैडम सैफाली जी बता रही थी कि आपने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ या दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम किया, विशेषकर जैसे वाटर वर्क्स है, दूसरी चीजों पर आपने काम किया है. तो इस प्रकार का भी कोई केस स्टडी है जिसे आपने किसी एरिया में, किसी गांव में या किसी शहर में, किसी कॉलोनी में वाटर को लेकर इस प्रकार का काम करके उसका केस स्टडी किया हो? हालांकि अभी हमने बनाया नहीं है, बट वी आर टॉकिंग. जो अगर आपने अभी एक कैंपेन देखा होगा नेशनल वाटर मिशन का, कैच द रेन कैंपेन, जो लास्ट ईयर से शुरू किया था, उस पे हमने काम किया था. वो कैंपेन वी हैड सजेस्टेड टू नेशनल वाटर मिशन. हाँ, तो नेशनल वाटर मिशन बहुत अभी काम कर रहा है. उसमें हमने उनको सजेस्ट किया था कि आपको अगर ब्लॉक लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करना है तो बहुत जरूरी है कि आप एक डीसी को ले और उस डीसी जिसने भी इम्प्लीमेंट किया है उस डीसी का एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ शेयर करें. भाई चाहे कोई एसडीएम है या आपका डिप्टी जो कमिश्नर है, कोई भी इस तरह का अगर एंटिटी है, ऑफिसर है, हु हैज इम्प्लीमेंटेड any such program in their area, it will become a good experience sharing. Plus वो ये भी बताएंगे हमें क्या क्या दिक्कतें आई शुरू में, हमने उनको कैसे ओवरकम किया. So this automatically becomes a case study. अभी तक ये क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा सा I don't know हरियाणा गवर्नमेंट का वो रहता है, we want to write a case study on this because it's a very powerful work which we have done. In fact, in Gurgaon we are active with Guru Jal. Being in MDI, being in Haryana and being in Gurgaon, तो गुरु जल करके एक एंटिटी है, उनके साथ हमने वाटर के ऊपर we have done series of these panel discussions as well. तो उसमें भी काफी केसेस एनजीओस के साथ जो हमने मिलके काम किया, वो उसमें काफी केसेस निकल के आए हैं, बट अभी तक उसमें कुछ भी पब्लिश नहीं हुआ. रिपोर्ट जो हमने दी थी वो पब्लिश है इनकी वेबसाइट पे. आई थिंक आई शुड बी एबल टू गिव द लिंक ऑफ दैट रिपोर्ट, बट अभी तक उसका केस स्टडी ये हार्वर्ड आईवी टाइप पे नहीं छपा. बट इट्स अ वेरी पावरफुल केस, वन कैन पब्लिश. यस मैडम, डीसी या एसडीएम या उनके पास तो चीजें नहीं मिलेंगी. आप एनजीओ के बारे में बात करें ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डूइंग वेल, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी वेल. यस यस. इसमें राजेंद्र सिंह राणा का आपने नाम सुना होगा, जल पुरस्कार जिन्होंने राजस्थान में
10,000 पाउंड तैयार किए, 7 नदियों को जीवित किया। तो इस प्रकार का ये केस स्टडी है। ये मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो केस स्टडी है वो ज्यादा ऑफिसर के पास तो क्या है, उसको ओवरबर्डन्ड लोग हैं उनके पास तो इस प्रकार का क्या रहेगा, जस्ट दे आर डूइंग। भाजी, इस सेशन के बाद frankly speaking, if you are motivated to write a case on this, we will be ready to collaborate and we can work. Data तो हम कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे, we can go, we can interview people, उतना उसमें कोई इशू नहीं है। बिकॉज एक हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जान पहचान में है फ्रेंड, उन्होंने अभी हिस्ट्री में प्रोफेसर है, लेकिन उन्होंने एक प्रोजेक्ट अभी लिया जो आप बता रहे हो। एक पहले उन्होंने ये बावलीज पे काम किया है, जी एंड नाउ ही इज वर्किंग ऑन सेम बावलीज एंड पॉन्ड्स जो आपने बताया, उन्हीं के मोस्ट लाइकली उन्हीं के साथ शायद काम कर रहे हैं इन राजस्थान। एंड we have invited in fact this person once, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। he has done one talk in India in MDI as well of his work in various parts in Rajasthan. थैंक यू। Yes. एक वो उनका नाम भी है ना, उनको वाटर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो उस पे हमने काफी वो किया है। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं यहीं पे जूम लिंक शेयर कर देती हूँ so that we can have a we'll have a possibility of having Zoom के ऊपर ना हम वो कर पाएंगे शायद से, what do you call this, ग्रुप्स बन जाएंगे। ग्रुप्स बन जाएंगे। हाँ, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। हाँ शेफाली जी। हाँ जी बिल्कुल। एग्जॉस्ट हो जाएंगे, टीचर्स को ज्यादा सुनने की आदत नहीं है, हम लोग को बोलने की ज्यादा आदत है। इन लोगों के लिए नया है ना केस स्टडीज का, बट इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रैक्टिकल। देखो, मेरा ये मानना है अगर हम इस तरह के प्रोग्राम में 4-5 लोगों को भी मोटिवेट कर पाए कुछ इस टाइप का लिखने के लिए। आप एक तो देखिए, जो भी हम ये चीज लिखते हैं ना केस स्टडी फॉर्म में, वो लाइफ लॉन्ग आपका एक मतलब आपके नाम से पब्लिश होती है, कोई भी सर्च करेगा एंड इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल आइडेंटिटी ऑफ योर्स इन द ऑनलाइन स्पेस। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एटलीस्ट हमारी इस तरह की वर्कशॉप्स का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि दैट वी आर एबल टू मोटिवेट मे बी इवन वन। मैंने भी अपना पहला केस ना ऐसी एक वर्कशॉप में मैं गई थी निर्मा, वहीं से सीखा था और लिखा था। शुरुआत ऐसे ही होती है। एंड सी नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द हार्वर्ड फॉर द केसलेट्स। तो जब हार्वर्ड की उस पे जाके आपका नाम और वो सर्च करो तो आपका केस आता है। मुझे याद है जब पहला केस ऐसे छपा था तो मतलब किसी और को खुशी हुई नहीं, अपनी खुशी के लिए बहुत था, मैं दिखाने के लिए नहीं, बट खुद को एक बड़ी वो होती है कि चलो ठीक है, बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है that you are at the मतलब we consider Harvard business cases to be the best of the cases in the world, है ना। और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में केस बहुत सारे आते हैं, बिग हार्वर्ड केसेस को हम स्टडी भी करते हैं टाइप ऑफ केस स्टडीज में भी। तो दे आर नोन टू बी द क्वालिटी बेंचमार्क्स फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। आपकी इस प्रोग्राम में तो एक बार मैं ये कह रही हूँ जैसे फॉलो अप कुछ होना चाहिए, जैसे आपने अगर अभी किया फिर एक बार 2 दिन का या 1 दिन का फॉलो अप टाइप कुछ अगर आप रखेंगे ना तो ये सजेशन हम हर कमेटी में रखकर आती हूँ मैं यूजीसी में, इन एवरी कमेटी। पर आज तक कोई ऐसा पैटर्न हम अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, ऐसा कोई अभी तक हम मेजर नहीं ले पाए हैं जहां पर हम पार्टिसिपेंट्स के साथ उस तरह से रहें। और दूसरा सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि HRDCs की इम्पोर्टेंस ना तो गवर्नमेंट रियलाइज कर पाई है, ना इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज कर पाई हैं जहां पर हम हैं, और ना ही पार्टिसिपेंट्स रियलाइज करते हैं। इट इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म, इट इज अ वेरी गुड। हमने तो देखिए बीइंग अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हमने जब भी इस तरह का प्रोग्राम किया है ना FDP, तो उसमें हम ऐसे ही रखते हैं कि वी जनरली keep it 3 days and then we keep 1 day later, which could be now। अब तो सब ऑनलाइन से इतने इजीली वो हो चुके हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं,
कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन ही करना है, बट उसमें बेनिफिट ये रहता है कि देयर इज सम मतलब somebody who is answerable, getting my point. मतलब आपको ये रहता है कि हाँ ये मुझे 1 महीने के बाद दोबारा ये वाली मीटिंग अटेंड करनी है और मुझे उसमें दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या काम किया। नहीं तो क्या है, हम लोग सब अटेंड करते हैं और फिर अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कीर्ति, और बहुत अच्छा तरीका आपने हमें बताया है। आई विल ट्राई टू अडॉप्ट इट इन दीज प्रोग्राम्स। आपका मैं जीमेल वाले पे भेज रही हूँ। हाँ ठीक है, आप भेज दीजिए। प्लस 1 मिनट, ये हो गया। आई थिंक दे शुड बी एबल टू लॉग इन। ये मैं चैट में मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, आप प्लीज इसको कहीं पे अपने कॉपी कर लीजिए। आ गया, दिख रहा है चैट में? विजिबल है, ये Zoom दिख रहा है पूरा चैट ये में। प्लीज, हाँ बस यहीं से आप लोग एंटर कर लेंगे। यू कैन एंटर बिफोर मी ऑल्सो, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि होस्ट हैज टू एंटर यू। तो 3-5 पे मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ से साइन आउट कर दें फिर शफाली। हाँ अभी एक बार सब लोग कॉपी कर लीजिए इस लिंक को। हाँ, अभी साइन आउट नहीं करते, साइन आउट कॉपी करके फिर हम इसको बंद कर देंगे। हम इस मीटिंग को ही लीव कर देंगे, होस्ट की तरफ से ही एंड कर देंगे इसको हम 5 मिनट के बाद। हाँ, अभी मत करिए, लेट पीपल जॉइन देयर, देन वी कैन डू दिस। आप लोग यहाँ से जूम मीटिंग का ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लीजिए और इससे कनेक्ट करिएगा, और ब्रेक लेंगे यहाँ पे 15 मिनट का। एट 3:15 अगेन वी विल रिकनेक्ट। Good. So people have started joining and I think this is visible. Great. I'm leaving from here because my camera is using this Meet, तो वो वहां नहीं यूज कर पा रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ से लीव कर रही हूँ, आप इसको बाद में बंद करिएगा। जय हनुमान। आप सभी पार्टिसिपेंट्स ने लिंक कॉपी कर लिया होगा, और जूम पे जो चैट बॉक्स के अंदर लिंक है उस पे आप कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ से हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। हाँ, शिखा। हाँ, बताइए।